Registration Act basically tell us what properties need registration, right? So this is what basically focus upon Indian Registration Act is, and we have understand that this what properties need registration is dealt under section 17, and we were doing section 17 ka clause 1, and section 17 clause 1 is an opening statement which says that the list of properties given below need registration. This is what we have done, and in that process we have done section 17 1A. What does section 17 1A says? Section 17 clause 1A says instrument of gifts of immovable property. So, instrument of gift. We have understand what do you mean by instrument of gift, and in that only we have understand basically gift of immovable property, irrespective of its value, need registration. It need registration. This is what we have done, right? Remember? And in this concept only we have understand the Muslim gift, and we have understand the difference between hiba. What is the situation when a Muslim is doing hiba, and what is the situation when Muslim is doing hiba bil hibas. ये हमने किया था. How many people are clear with this? This is a quick basic revision that we have to do. चलिए. Now let us go into 17 का clause B. Let us go into 17 clause B. Section 17 1B. Let me read section 17 clause 1B for you, and we'll try to find out what does the provision mean to say to us. This is other non-testamentary instrument. So, other basically they mean to say apart from section 17A to section 17A, gift is also a non-testamentary instrument, and that is why this is other non-testamentary instrument. So other basically means excluding clause A. That means clause B have no application upon clause A. That means a gift is a non-testamentary instrument, no doubt, but still it will be made registrable under section 17(1)A instead of section 17(1)B. Why? Where is the difference lies? We will understand that. This is non-testamentary. What do you mean by non-testamentary instrument? What do you mean by non-testamentary instruments? Non-testamentary instruments basically means that will come into force immediately, that have immediate effect, that will transfers the right of a person immediately. So basically these are instruments mean a document. The instrument being document. Non-testamentary means which transfers the title immediately. Which transfer title immediately. So any instrument which transfers the title immediately. Right. This is other non-testamentary instrument which purport. What do you mean by purport? What is the meaning of word purport? Purport means what the document is being seen on front.
अपेरेंटली डॉक्यूमेंट कैसा दिख रहा है, उसके फ्रंट पेज पे लिखा क्या है. परपोर्ट मीन्स आउटसाइड, तो बेसिकली अपेरेंट on face. So what is apparent on face? What is apparent on face? That is what basically intended, what purport word goes with the intention of the executor. Intention of executor. So what purport goes with the what intention of the executor. So what this instrument is saying, what the instrument intending. Another this is purport or operate to. That what operate to, that means they are talking about what law considered it. What law considered the document. So they are saying either. So basically situation क्या है कि there is a non-testamentary document which either there is an intention of the party इंटेंट कर रही है, या अगर पार्टी नहीं भी इंटेंट कर रही है तो डॉक्यूमेंट का नेचर ऐसा है which law इंटेंट, तो डॉक्यूमेंट ऑफ सच नेचर which law defines nature of document. Okay. So law is defining the nature of the document. Which type of nature of the document? This is. अब बात करें, समझ के 3 लाइन का मतलब समझ में आ रहा है. Other document. Other means not apart from gift. So section B is not applying on gift. Apart from gift, there is a non-testamentary document which either on the face intended by the party, or though it is not intended by the party, but law considered it. कैसा? To create. This is to create, to declare, to assign, to limit, or to extinguish. ठीक है, क्या चीज? To create, to declare, to assign, to limit, or to extinguish what? This is whether present or future, any right or title. This is whether present or in future. What right, title और इंटरेस्ट. तो बोलते हैं एनी, अब मैं समझ के देखते हैं इसको एक एक करके ब्रेक करके, हम ग्रीन पोर्शंस को ब्रेक करते हैं और हम ट्राई टू ब्रिंग आउट वन बाय वन. फर्स्ट ऊपर वाली लाइन के साथ रीड करेंगे. अदर इंस्ट्रूमेंट व्हिच परपोर्ट और ऑपरेट टू क्रिएट whether present or future, rights, टाइटल और इंटरेस्ट. ऐसा कोई डॉक्यूमेंट या तो वो पार्टी इंटेंड कर रही है, either the party is intending to create any right or title or interest. right, title, interest we know what is, basically तीनों का मतलब एक ही है ना, वो प्रेजेंट और फ्यूचर की वजह से अलग अलग लिखा गया है. ठीक है, तो they create to either present right, they are creating any present right or title or interest in the property. ठीक है, or they are interested to create right in the property in future. So basically they are talking about what? Sale. The sale is something which create present right or title or interest in the property. हाँ या ना? Sale always create. Lease. They are talking about lease. But lease को हम अगले वाले क्लॉज में डालेंगे. तो सेल बेसिकली यहाँ पे हम सेल पढ़ेंगे सिर्फ, तो अलग अलग क्लॉज है ना, तो अलग अलग पढ़ेंगे. तो they are making talking about sale. तो ऐसी कोई सेल या एग्रीमेंट टू सेल बेसिकली,
They can also be agreement to sale. So agreement to sale. तो sale create present right और agreement to sale create future right, interest और title. ठीक है. Second situation. तो अभी ऑपरेट परपोर्ट और ऑपरेट का मतलब समझ में आया. अभी परपोर्ट और ऑपरेट का मतलब समझ में आया. परपोर्ट्स का मतलब क्या है? पार्टी डायरेक्टली सेइंग वी आर सेलिंग, वी आर एग्रीमेंट टू सेल. ऑपरेट टू पार्टी आर नॉट सेइंग डायरेक्टली, बट ट्रांजैक्शन ऐसा है जहां पे लॉ क्या कंसीडर कर लेता है, ऐसे ट्रांजैक्शंस को क्या मान लेता है? सेल मान लेता है. ये ऐसे ट्रांजैक्शन को एग्रीमेंट टू सेल मान लेता है. सेकंड सिचुएशन दिस इज अदर नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट, यानी कि अपार्ट फ्रॉम गिफ्ट an instrument, non-testamentary instrument that purports or operates, यानी कि either party considered them or due to some law they consider to declare whether present or future rights. They declare present or future rights. ठीक है, related to right, future right, title और interest. तो बेसिकली किन की बात कर रहे हैं? ये लाइफ स्टेट याद है? रिमेंबर दे आर टॉकिंग अबाउट लाइफ स्टेट. लाइफ स्टेट्स. तो लाइफ स्टेट्स या विल, तो लाइफ स्टेट और विल इसका एग्जांपल्स हैं. तो लाइफ स्टेट क्या करती है? फ्यूचर में किसी के अंदर राइट भेजती है कि आफ्टर दिस पर्सन दिस इज कंसीडर्ड टू बी द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी. विल भी तो यही करती है कि आफ्टर माय डेथ आई डिक्लेयर दिस पर्सन टू बी द ऑनर ऑफ माय प्रॉपर्टी. तो विल या फिर लाइफ स्टेट. नेक्स्ट, दिस इज टू असाइन. थर्ड, टू असाइन whether present or future rights, title or interest. Right. They are saying whether you are assigning. What do you mean by word assign? When you assign something, how do you assign something? Tell me. Assignments कैसे करते हैं? Lease, mortgage. Lease और mortgage के अंदर आप assignments कर रहे हैं ना? You are assigning certain things. So you will never transfer. You never transfer complete right. You assign certain right to that person. So you are assigning present or future rights. ठीक है, तो lease, mortgage, rent agreement, etc. इस टाइप के ट्रांजेक्शंस. Then to limit. Again, to limit. To limit whether present or future right, title or interest. What do you mean by to limit? Limit आप किसी के अंदर लिमिटेड राइट कब क्रिएट करते हो? नॉर्मली लाइफ स्टेट्स. ठीक है, जब आप लाइफ स्टेट्स क्रिएट करते हो या फिर कोई who is revisioners rights. Remember, आप रिविजनर्स को बताते हो कि आपके पास प्रॉपर्टी इतनी आएगी. ठीक है, पीछे जब जाती है जितने भी रिविजनर्स राइट्स हैं वो उन सब की बात कर रहे हैं. दिस इज और लास्ट टू एक्सटिंग्विश अगेन गोज विद विल, यानी कि आप किसी लोगों के राइट को खत्म करते हो. यू डिक्लेयर दैट ही इज नॉट अ पर्सन और द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी. ठीक है, तो extinguishments means basically declarations. Extinguish we can say declarations, or I can say easementary documents, है ना? Any easementary document written, किसी ने अपना easementary document भी तो यही करते हैं, extinguish करते हैं. तो किसी ने easement deed लिख लिया तो बोलते हैं any of these deed. तो लीज है, mortgage है, रेंट एग्रीमेंट है, रिविजनर्स राइट है, लाइफ स्टेट है, सेल है, विल है, ये सारी की सारी क्लॉज बी में कवर करते हैं. अब क्या बोलते हैं?
आगे पढ़ते हैं. Non-testamentary document which purport or operate to create, declare, assign, limit or extinguish whether present or in future any right, title or interest. यहाँ तक हमको समझ आया? किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? शिवानी बेटा प्रॉब्लम? आयुषी प्रॉब्लम? सेफ? राहुल क्लियर है? नहीं है? नॉट क्लियर? राहुल क्लियर है ना? डन. चलिए आगे. This is whether vested or contingent. The right, nature of right की बात कर रहे हैं. Nature of right can be vested or contingent. What is vested rights, please? Can anyone tell me what is vested right? Defined under which section of transfer property act? Jaldi. What do you mean by? हाँ बोलो बोलो. Absolute right. Defined under section. Very good. 19 of vested right and contingent interest. Very good. Section 21. तो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के TPA में vested interest has been defined under section 90 and contingent interest has been defined under section 20. Vested interest की खासियत क्या होती है? Vested interest is about, क्योंकि हमने TPM पढ़ा है वो शॉर्ट रखूंगा बिकॉज़ TPM वर्ड देखना पड़ता है इसको. Vested interest में क्या था? The property immediately, है ना, goes into the ownership of a other person. तो ownership transfer immediately. Ownership depend upon certain event. Contingents mean ownership depend upon contingent. Ownership depends upon certain event. तो ownership transfer. तो basically ownership depend upon certain event मतलब transfer of the ownership depend upon certain event. वो contingent interest होती है. तो बोलते हैं it doesn't matter whether the instrument talk about vested interest or contingent interest. That is not important. Important is that instrument is non-testamentary. That is instrument is taking effect immediately. So whatever is written in the instrument that take effect immediately, whether the ownership or the title of that property transfer in present or in future. Right in the property transfer present or future. आगे क्या लिखते हैं? Of the property value of 100 rupees and upward. Immovable property value above 100 rupees. तो बोलते हैं अगर immovable property value above 100 rupees है, ठीक है, तब क्या है? Now it's mandatory to register. Mandate to register. तो बेसिकली अगर ध्यान से इस पूरे क्लॉज को हम रीड करेंगे, we try to read this. देख लीजिए पहले. We try to read complete clause. So this complete clause basically simple thing is saying to us that what any non-testamentary instrument of immovable property. First, there is a non-testamentary instrument of immovable property. First, second, value of immovable property is above 100 rupees, and the value of the property is above 100 rupees. Third, nature of instrument is to create, declare, assign, extend or limit, I will say not extend, limit or extinguish right, title or interest in property.
विच प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो नेचर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कैसा है, ऐसा है कि या तो वो क्रिएट कर रहा है कोई राइट इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी, या फिर कोई राइट डिक्लेयर कर रहा है उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर, या फिर उस मूवेबल प्रॉपर्टी का किसी राइट को असाइन किया जा रहा है, या उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के किसी राइट को लिमिट किया जा रहा है, या इमूवेबल प्रॉपर्टी के किसी राइट को एक्सटिंग्विश किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। ठीक है। फोर्थ, वेदर हैपनिंग in future or present. When I say happening in future or present, basically they are talking about vested and contingent, है ना? Whether this happened in vested nature or contingent nature. अगर ये सारी चीजें fulfill हो रही है, अगर ये 4 conditions are being fulfilled, then it is what? Section 17(1)(b) need mandatory registration. This need mandatory registrations. This is what need a mandatory registration. How many people understand this? 17(1)(b), how many people have understood this? How many people have not understood this? How many people have understood this की जगह वो लोग हाथ खड़ा कि those who have not understood it. Let me know the people who have not understood it. Who have not understood it? Aditi has not understood. मैं वापस नीचे कर रहा हूँ अभी, अब now Rose raise hand who have not understood the concept. Very one. चलिए, क्या नहीं समझ में आया? Tell me. क्या नहीं समझ में आया? अदिति बोलो, unmute करो अपना and tell me what you have not understood. सर प्लीज एक बार ये पूरा कंसेप्ट एक बार प्लीज रिपीट कर दो सर, मेरे को समझ नहीं आया था, बीच में से स्किप हो गया था। पूरा कॉन्सेप्ट तो बेटा बड़ा मुश्किल है, बट सिंप्लीफाई कर सकता हूँ इसको, है ना? इट्स नॉट इजी टू रिपीट द होल कॉन्सेप्ट, बट हाँ सिंप्लीफाई वे में हम समझ सकते हैं। ये सिंपल बोल रहे हैं कि एक डॉक्यूमेंट है, दिस डॉक्यूमेंट रिलेट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, है ना? तो डॉक्यूमेंट कैसा है? नॉन टेस्टामेंट्री। They are non-testamentary documents. ठीक है। अब what they are saying, this says कि ये जो non-testamentary documents है, ये इस तरीके का है, जो ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसमें राइट और टाइटल और इंटरेस्ट। So basically we have understand TP and we have understand that they are talking about all. Interest is what? Right only. Title is what? Right or interest only. But basically बहुत सारी चीजों को बोला है, इसलिए अलग अलग डिफाइन कर दिया, बट ओवरऑल देखा जाए तो सब चीजें एक ही है। तो इन चीजों को तो समझने की जरूरत नहीं है। What do you mean by right? What do you mean by title? Or what do you mean by interest? So interest basically property is property. Property is interest. You know this. They are saying when you are transferring interest. They say अगर कोई नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट है जो अभी इफेक्ट कर रहा है, जो आज ही से एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, और वो किस नेचर का है, वो किसी राइट और राइट को क्रिएट कर रहा है, तो किसी एक प्रॉपर्टी में किसी एक इंडिविजुअल का राइट है और वो नया राइट क्रिएट कर रहा है आज ही, चाहे वो वेस्टेड फॉर्म में हो, चाहे वो डजंट मैटर, मतलब वो डॉक्यूमेंट आज एग्जीक्यूट हो गया, चाहे वो राइट कब फ्यूचर में क्रिएट कर रहा है, पास्ट में क्रिएट कर रहा है, डजंट मैटर, बट दैट इज नॉन टेस्टामेंटरी, दैट डॉक्यूमेंट इज टेकिंग इफेक्ट टुडे, ठीक है, डॉक्यूमेंट आज एग्जीक्यूट हो रहा है, चाहे उसके रिजल्ट्स बात को आए, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट डॉक्यूमेंट हैज बीन एग्जीक्यूटेड, ठीक है। या फिर वो व्हाट दे आर सेइंग, वो क्या कर रहा है, वो लिमिट कर रहा है, तो किसी प्रॉपर्टी के किसी राइट का यूज को लिमिटेशन, फॉर एग्जांपल वफ इज लिमिटिंग द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल, क्या आप इसे एंजॉय कर सकते हैं और आप सेल नहीं कर पाएंगे, वफ अलुल औलाद होता है ना मुस्लिम्स में, ठीक है, तो आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे,
या फिर क्या कर रहा है, असाइनमेंट्स कर रहा है, इट इज असाइनिंग इट, फॉर एग्जांपल मॉर्गेज और लीज, ठीक है, या फिर वो एक्सटिंग्विश कर रहा है, दैट इज डिक्लेयरिंग समथिंग. So he is declaring कि from today only he will be considered as the owner of the my property and I am dead. So these are declarations to extinguishing some certain rights. ठीक है, अगर ये डॉक्यूमेंट ऐसा है और ये चार चीजें हैं और ये जो जो प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी है वैल्यू इज 100 से अपवर्ड, जिसकी वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा है, ठीक है, तब क्या होगा, ये डॉक्यूमेंट मस्ट गेट रजिस्टर्ड, डॉक्यूमेंट मस्ट गेट रजिस्टर्ड. और अगर रजिस्टर नहीं कराया तो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे क्या, सेक्शन 49. व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेस, दिस डॉक्यूमेंट हमने पढ़ा था कॉन्सिक्वेंसेस को, दैट दिस डॉक्यूमेंट विल नॉट हैव एनी लीगल इम्पैक्ट्स और it will not be used in evidence to prove that the existence, the extinguishment, the limit or assignments of said documents. हाँ या ना, clear हो, is it clear? चलिए, अभी क्लियर हुआ प्लीज अतिथि, चलिए ठीक है. अब इस माइंडसेट के साथ आई विल क्रिएट सर्टेन एग्जांपल, आप मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि वेदर दिस रिक्वायर्ड द रजिस्ट्रेशन और नॉट. तो फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, और फाइंड आउट करेंगे कि रजिस्ट्रेशन है या नहीं. फर्स्ट, डॉक्यूमेंट ऑफ पार्टनर, नहीं डॉक्यूमेंट ऑफ पार्टीशन, लेट इट बी डॉक्यूमेंट ऑफ पार्टीशन. तो पार्टीशन हो रहा है, आइदर जॉइंट हिंदू फैमिली है या फिर को ओनर्स हैं या को शेयरर्स हैं. तो बेसिकली हम जॉइंट हिंदू फैमिली का एग्जांपल लेते हैं. तो पार्टीशन ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बताइए, पार्टीशन ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली, आंसर फर्स्ट, नीड रजिस्ट्रेशन और नॉट, विदाउट, डू नॉट आंसर मी यस और नो, and answer me with reason logic. So apply section 17, we will apply section 17 and we'll find out. Without application of section 17 answer is no, yes or no, है ना, because अब हमें लॉ पता है तो हमको इसका आंसर भी बताना चाहिए कि कैसे लो. देखिए, partition basically try to understand. Example, property is above 100 rupees always. So first of all, प्रॉपर्टी 100 रुपीज ऊपर ही है, सारे एग्जांपल है उसमें प्रॉपर्टी 100 रुपीज ऊपर है, तो हमको उसको तो सीखना ही नहीं है ना. मैं जितने भी एग्जांपल लिखाने वाला हूँ उसमें 100 रुपीज के ऊपर की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है. अब पार्टीशन ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली करता क्या है, व्हाट इज द इफेक्ट्स ऑफ पार्टीशन ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली, डज इट क्रिएट राइट, डज इट क्रिएट राइट, डज इट क्रिएट राइट, बताइए. आंसर इज नो, पार्टीशन नेवर क्रिएट राइट, बिकॉज इट इज राइट्स आर ऑलवेज ऑलरेडी देयर, है ना, इट इज ऑलरेडी देयर. सेकंड सिचुएशन, हमारे पास क्या है, डज इट assign right, this is not assignment, this is not assignment. Third, does it limit rights, answer is yes, it can limit, it can limit. Why? Because पहले ये नहीं पता था कौन कहाँ यूज करेगा, but now it is telling कि out of this property you will be using this, 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 somebody will be using this. They are limiting their rights. Your right is limited to this only, ठीक है, their right is limited to this only. Yes, the partition document may limit the right. Or we can say last, extinguishment. Yes, answer is it can fall in this also, it can extinguish also because it is declaring rights, है ना, डिक्लेयर कर रहा है ना कि तुम्हारा राइट इस वाले पार्ट में है, तुम्हारा राइट इस वाले पार्ट में है. तो ही इज सेइंग आपका इस वाले पार्ट में है बट आपका इस वाले पार्ट में नहीं है.
You have this but you don't have this, है ना? So it is limiting and distinguishing. Yes, yes, partition need registration. The partition need registration. Why? Because it fall under section 17(1)(b) का पार्ट लिमिट या एक्सटिंग्विशमेंट है, इनमें से एक, राइट? Suppose, let me create a B example. Suppose there is a joint Hindu family, right? There is a joint Hindu family. A, B, C, D, E, F, and G are the members of joint Hindu family. Member of joint Hindu family. So they are the member of joint Hindu. The joint Hindu family is the one unit always. So they are joint member of joint Hindu family. They all नहीं, it is not necessary to fulfill all the conditions. इनमें से किसी एक कंडीशन में फॉल करते हैं ना, सारी को फुलफिल कर ही नहीं सकता. तो चौथी जो कंडीशन है, आपको समझो ना, ये बेसिकली जो चौथी कंडीशन है, ये वाली, ये एक अपने आप में ये एक कंडीशन है, ये अपने दो कंडीशन है, ये अपने आप में तीसरी कंडीशन है, ये अपने आप में चार कंडीशन. तो अलग अलग कंडीशन है, किसी में ही फॉल कर जाएगा ना, किसी में ही फॉल कर गया तो सेक्शन 33 में जाएगा और 17B में जाएगा. हमेशा 100 रुपए से ऊपर होना चाहिए, नॉन टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, इमोरल प्रॉपर्टी होना चाहिए. तीन चीजें. और तीन के बाद जो चौथी कंडीशन है, चौथी के चार पार्ट्स है, किसी में फॉल कर दे, क्रिएट कर दे, है ना, असाइन कर दे, लिमिट कर दे या एक्सटिंग्विश कर दे, किसी एक में भी फॉल करेगा तो इट इज मैंडेटरी रजिस्टर्ड. अब क्वेश्चन समझिएगा, ए बी सी डी ई एफ जी, ये जॉइंट हिंदू फैमिली, दे ऑल मेक अ पार्टीशन. जॉइंट पार्टीशन, जॉइंट और म्यूचुअली एग्रीड, है ना? तो दे म्यूचुअली मेक अ पार्टीशन. And after making partition, they enjoy their shares. They enjoy their shares. What happened? B, for its memory, make a memorandum or acknowledgement of partition. So what happened? B, for just अपनी memory के लिए, he make acknowledgement of partition, and all members signed it, but not registered. But not registered. Okay. They not get registered. What happened? Dispute arises. Dispute arises. Dispute arise हो गया. We want to use this acknowledgement of partition to be used in evidence. Other objects the evidence on ground of section 17 clause B, section 17(1) clause B, read with section 49. Yeah, decide. Now you people decide fast.
बताइए। फर्स्ट डिसाइड, आपको एक कंडीशन डिसाइड करनी है। तो if you want to use this acknowledgement and other are saying sorry you cannot use it because it is barred by section 17 1B right with, ठीक है, 1 section 19. So my question is this, can be decide whether B can be allowed or not, whether be allowed or not, whether be allowed or not. Answer is why, and why का आंसर हमेशा yes or no नहीं होता, you must give me reason. If you are saying yes, why? If you are saying no, why? Question, will it be hit by section, will it hit by section 17 1B, will it hit by section 17 1B? सवाल समझ रहे हो मेरा क्या है सारे लोग? आंसर मुझे हाथ खड़ा करके देना जिसको देना है, कोई भी लिख के नहीं देगा। मेरा सवाल समझ लो क्या है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ लोगों से कि एक फैमिली है, उन्होंने पार्टीशन किया, ठीक है, पार्टीशन करने के बाद उन्होंने वो पार्टीशन को रजिस्टर्ड नहीं कराया, उनमें से एक भाई ने उसको सिर्फ नंबरी के तौर पर लिख लिया, ठीक है, वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। अब उनमें उस पार्टीशन को लेकर डिस्प्यूट आ गया एंड दिस ब्रदर who have that document written, ठीक है, as an acknowledgement, want to use it as an evidence, ठीक है, other brothers are saying you cannot use it because section 17 1B says partitions deeds must be registered, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है, and therefore sections under 17B it is not registered and therefore section 49 will apply and this cannot be used in evidence. You decide whether A will succeed or not. We want to use this acknowledgement of partition, ठीक है, as an evidence, ठीक है, used in evidence. Other objects the evidence on the ground of section 17 1B read with section 49. चलिए बताइए श्रेया। So I think we can use it as evidence because it is just an acknowledgement. Acknowledge ही कर रहा है वो, उसमें कुछ create नहीं कर रहा वो, right? ना ही वो declare कर रहा है. I don't think वो declare कर रहा है. Definitely assign or limit or extinguish तो नहीं कर रहा. Exactly. So I think accordingly. Answer is this only. There is no need to think. This is the right concept. Acknowledgements does not cover under section 17 1B. तो basically देखिए, acknowledgement of partnership, acknowledgement of partition is not create, limit, assign or extinguish any right. तो वो limit, assign, extinguish नहीं कर रहा है. What they have done, they are acknowledging it, right? Or it's not a collateral, Arjuni, it's not a collateral transaction. But that is a different thing, right? And hence not fall under section 17 1B and therefore section 49 will not apply and hence can be used in evidence. तो create, कुछ right create थोड़ी कर रहा है, partition में कुछ सिर्फ acknowledgement कर रहा है, तो something is already created. What is created, that is been acknowledged. तो right तो already create हो चुका है, ठीक है, limit नहीं, पहले से ही already decide कर चुके what are the limitations, वो decided है, कुछ ये document कुछ decide ही नहीं कर रहा है, ये तो जो decide हुआ उसको acknowledge कर रहा है. Assignment तो obvious नहीं है, extinguishment तो obvious नहीं है ना. तो जो right create किए हैं, जो title और interest create किए हैं, इन्होंने अपने साथ बैठकर उनको सिर्फ acknowledge कर रहा है ना. This will not fall under non-testamental document and this can be used
ठीक है, एज तो ज्वाइंट हिंदू फैमिलीज का ओरल पार्टीशन हो सकता है, डोंट वरी। अगर होता है तो उसके एक्नॉलेजमेंट्स लिखे जा सकते हैं। अगर उसके एक्नॉलेजमेंट्स लिखे गए तो देयर एक्नॉलेजमेंट डज नॉट फॉल अंडर सेक्शन 17। ठीक है, जजमेंट का नाम लिख लीजिए, मुन्ना लाल। बहुत जजमेंट है इसके, बट मैं आपको एक जजमेंट छोटा सा निकाल रहा हूँ। मुन्ना लाल वर्सेस सूरज भान। सूरज भान 1975 सुप्रीम कोर्ट। There are so many judgments of this. ठीक है, there are so many judgments. जिसको सेक्शन 17 समझ में आया उसको ये भी समझ में आ जाएगा। तो इसमें किसनों को नहीं समझ में आया कि मैं क्यों कह रहा हूँ। एक्नॉलेजमेंट इज नॉट क्रिएटिंग, and hence can used in evidence, can be used in evidence. तो बेसिकली एक्नॉलेजमेंट जो है ना, आप समझो ना, what is using, उसका डॉक्यूमेंट क्या है, that is not partition, that is acknowledgement of partition. तो we need partition deed जो होगी ना, उसको तो रजिस्ट्रेशन की शायद हम क्वेश्चन कर जाएं, ठीक है, बट दिस इज नॉट अ पार्टीशन deed, this is the acknowledgement of partition. What do you mean by acknowledge of non-partition? तो that means अगर डॉक्यूमेंट क्या करेगा, डॉक्यूमेंट कैसा होना चाहिए, जो राइट क्रिएट करे। मुझे बताओ, एक्नॉलेजमेंट राइट क्रिएट कर रहा है? इट इज एक्नॉलेजिंग व्हाट इज ऑलरेडी क्रिएटेड। असाइन करे, ऑब्वियसली इट इज नॉट असाइनिंग, इसमें तो फॉलो ही नहीं करेगा कभी भी, है ना। लिमिट, अगर लिमिट में फॉलो करता है तो क्या कुछ लिमिट कर रहा है? नहीं, तो कुछ लिमिट ही नहीं कर रहा है। दिस इज नॉट लिमिटिंग एनीथिंग, है ना। कुछ कोई लिमिट थोड़ी कर रहा है। एक्सटिंग्विश कर रहा है किसी को? नहीं, कोई एक्सटिंग्विश कर रहा है। विल नॉट फॉल इन एनी ऑफ द पैराग्राफ। जब वो सेक्शन 71B के किसी भी पैराग्राफ में फॉल नहीं कर रहा है तो ऑब्वियस है इट डज नॉट रिक्वायर, इट डज नॉट रिक्वायर registration. ऐसा समझिए ना, एक और एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल है, समझ के देखिएगा, ये आपकी पीटी में बड़े काम आने वाले हैं, क्योंकि पीटी में आपको समझ में नहीं आता होगा। तो एक एग्जांपल है, A B C D, भाई ये चारों, दे मेक अ डीड, मेक अ डीड that we will do partition in future and each will have equal share. उन्होंने एक डॉक्यूमेंट बनाया, बताइए, does it need registration? Does this document need registration? Does this document need registration? क्या इस डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन की जरूरत है? बताइए। ध्यान से सिर्फ दिमाग लगाइए और समझने की कोशिश करिए। सेक्शन 17 का 1B रीड करिए और आप आंसर इज यस, नो, डज नॉट रीड रजिस्ट्रेशन। व्हाई? बिकॉज ये डॉक्यूमेंट कुछ भी क्रिएट ही नहीं कर रहा है, ये तो सिर्फ एक बात, फ्यूचर प्रॉमिस है, ये तो सिर्फ एक एग्रीमेंट है फ्यूचर ट्रांसफर का। यहाँ पे तो किसी राइट को क्रिएट ही नहीं किया गया। बट सपोज इसी डीड में अगर वो ये लिखते हैं, सपोज इसी डीड में वो ये लिख देते हैं that in future we have equal shares in which A have this, B have this, C will have this and this and this, D will have this and this and this. Now what is this? Now this is something which is creating future interest. ये पार्टीशन ऐसा है जो फ्यूचर में एक्टिव हो जाएगा और डॉक्यूमेंट आज प्रपोर्ट हो गया, है ना। दिस नीड रजिस्ट्रेशन। तो आपको हर बार देखना पड़ेगा कि पार्टीशन का जो डॉक्यूमेंट है वो क्या कर रहा है। कोई इंटरेस्ट
फ्यूचर या प्रेजेंट क्रिएट कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल आप बताइएगा मुझे। पार्टीशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टीशन डीड ऑफ पार्टनरशिप, पार्टीशन डीड ऑफ पार्टनरशिप, बताइए डज इट नीड रजिस्ट्रेशन और नो? आंसर बताइएगा पूरा, खुद से बस दिमाग लगा के बताइएगा। प्लीज डू नॉट अप्लाई इलॉजिकल माइंड। जो ऑप्शंस दिए उनको रीड करिए और ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या है। चलिए बॉस, कितने लोगों को आंसर पता है? जो कोई आंसर देना चाहेगा इसका? वेरी गुड। चलो और कौन कौन देना चाहेगा इसका आंसर? चलिए हम लगाने की कोशिश करते हैं, हम करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज पार्टनरशिप? व्हाट इज पार्टनरशिप फर्म? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज पार्टनरशिप फर्म? व्हाट इज पार्टनरशिप फर्म? कोई यूनिट है? दे आर टू पीपल, है ना, टू पीपल। Oh my God. Two people join to share profits. Simple. Nothing else. अगर किसी कोई कह रहा है पार्टनरशिप फर्म इज अ लीगल एंटिटी, ठीक है, अगर कोई ये बात बोल रहा है कि इट इज अ पार्टनरशिप इज अ लीगल एंटिटी, तो मेरा तो स्प्रेड हो नहीं सकता। ठीक है, सिंपल। इट इज टू पीपल कमिंग एंड शेयरिंग प्रॉफिट, है ना, तो शेयर इन प्रॉफिट है। तो जब पार्टनरशिप फर्म कोई एंटिटी ही नहीं है तो उसका सेपरेशन कुछ राइट कैसे क्रिएट कर सकता है? क्यों? क्योंकि ये तो ऑलरेडी तो पार्टनर्स के पार्टनरशिप में राइट तो ऑलरेडी पार्टनर्स के पास ही है। राइट्स आर ऑलरेडी विद पार्टनर्स। They merge it to merge for common purpose, merge for common purpose, है ना। उन्होंने कॉमन पर्पस के लिए मर्ज किया है और अब क्या कर रहे हैं? सेपरेटिंग। जब उन्होंने मर्ज किया तब कोई कुछ नया क्रिएट नहीं किया, और जब नया क्रिएट नहीं किया तो जब सेपरेट कर रहे होंगे तो फिर नया निकलेगा कहाँ से? समझ रहे हो ना? कोई नई चीज क्रिएट होगी तभी तो नया चीज बनेगा ना। तो जब पार्टनरशिप फर्म इज नथिंग, नो लीगल वैल्यू, तो वो जो प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टीज होती है, पार्टनर्स की प्रॉपर्टी होती है ना। यही तो पढ़ा है हमने पार्टनरशिप फर्म में कि पार्टनर्स के नाम होती पार्टनरशिप के नाम पे, बट वो पार्टनर्स की प्रॉपर्टी मानी जाती है। तो अगर उसका सेपरेशन होगा तो वो ऑलरेडी मेरी प्रॉपर्टी का सेपरेशन होगा, तो वो कैसे मुझे कोई नया राइट क्रिएट करेगा या नया कुछ और? इट विल नॉट क्रिएट एनीथिंग, है ना। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ partition of partnership firm, deed of partition of partnership firm does not need registration. Deed of partition of partnership firm does not need registration. इसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, ठीक है। SB Chandra Pandya versus SB Sivalinga Nagar, 1995 Supreme Court.
ऐसे बहुत सारे जजमेंट, बिकॉज दिस इज अ फिक्स्ड लॉ, बट मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। अब तो बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। अब मुझे बताइएगा, अब आप ढूंढ सकते हैं आंसर। राहुल आंसर बताएगा। relinquishment deed, relinquishment deed, what do you mean by relinquishment deed? कोई किसी अधिकार को त्याग देना, छोड़ देना, relinquish, और आई कैन से सरेंडर डीड्स, सरेंडर डीड्स भी होती है, दोनों अलग है बट एक साथ रीड कर सकते हैं। सरेंडर डीड्स, अपने राइट को सरेंडर कर देना गवर्नमेंट को। एग्रीकल्चर लैंड में होता है ये, तो नॉन एग्रीकल्चर लैंड में relinquish होते हैं और एग्रीकल्चर लैंड में सरेंडर कर दिए जाते हैं गवर्नमेंट को। अगर कोई relinquishment deed है या सरेंडर डीड है, will it need registration or not? बताइए, नीड रजिस्ट्रेशन और नॉट, बस इतना कर दीजिए। relinquishment deed, Rahul, will need registration or not? हाँ या ना? Shivani, will it need registration? Ayushi, relinquishment deed, मैंने अपने किसी राइट्स को relinquish कर दिया। आंसर इज यस। रीजन बताइए। आंसर इज जस्ट टेल मी द रीजन। वेरी गुड। बेसिकली इट इज extinguishing right. Very good. Not creating, this is extinguish. So relinquishment means extinguishing right. So any right which is extinguishing, yes, it need declaration. Tell me exchange deed. Tell me exchange deed. We know what is exchange. मैंने अपनी प्रॉपर्टी को आपकी प्रॉपर्टी से चेंज किया, वैल्यू अबव 100 रुपीज। Will it need registration or not? आंसर बताइएगा। Will it exchange deed registration or not? वेरी गुड। देखना, आंसर इज ये ए है और ये बी है। ये अपनी प्रॉपर्टी इनको दे रहे हैं और ये अपनी प्रॉपर्टी इनको दे रहे हैं। बताइए इसमें क्या हो रहा है? इसमें दो चीजें हो रही है। ए इज क्रिएटिंग राइट, creating B rights and extinguishing its rights। हाँ या ना? Similarly B यहाँ पे क्या कर रहा है? Creating right of A and extinguishing B right। अपने right को extinguish कर रहे हैं। बताइए, will it need registration? Answer is yes, always. Exchange deed always need registration. Why not? Why it will not? Exchange deed में नए राइट क्रिएट हो रहे हैं। मेरा एक प्रॉपर्टी में ऑलरेडी राइट है ही नहीं, वहां पे राइट क्रिएट हो रहा है। किसी और का मेरी प्रॉपर्टी में राइट नहीं है, मैं क्रिएट कर रहा हूँ, है ना? तो एक ही डीड के अंदर दो राइट्स क्रिएट किए जा रहे हैं और एक ही डीड के अंदर दो राइट्स को एक्सटिंग्विश भी किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली इट ऑलवेज नीड रजिस्ट्रेशन। इट ऑलवेज नीड रजिस्ट्रेशन। क्लियर हुआ नहीं हुआ प्लीज? Charge upon property. Charge upon property. Yeah. As maintenance. बताइए, तो मेंटेनेंस, फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनेंस चार्ज इज क्रिएटेड अपॉन द प्रॉपर्टी। तो हिंदू विडो है, उसको मेंटेनेंस क्लेम करना था, तो मेंटेनेंस देने के लिए क्या किया? चार्ज क्रिएट कर दिया। बच्चों ने बोला कि ये वाली प्रॉपर्टी का जितनी भी इनकम है या जो भी है वो आपके लिए यूज की जाएगी। ऐसी डीड की रजिस्ट्रेशन की जरूरत है? बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। Yes, very good. It will fall, basically it will fall as into assignment. This is the assignment. Need, yes, answer is yes. Need registration.
इसका मतलब सब लोगों को सेक्शन 17 क्लॉज भी हो गया। तो असाइनमेंट में भी जा सकते हैं और क्रिएट में तो कभी नहीं जाएंगे। तो इट इज ऑलवेज असाइनिंग और लिमिटिंग, है ना। इट कैन गो इन लिमिटिंग बट इट इज नॉट क्रिएटिंग एनी राइट। क्रिएट बेसिकली जब होता है जब हम एब्सोल्यूट की बात कर रहे हैं, ठीक है। बट क्रिएट भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, क्रिएट में भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वो कंटिंजेंट और वेस्टेड वर्ड यूज किया गया है, तो कहीं पे भी कैसे भी कर सकते हैं। चलिए, तो वी यू हैव क्लियर विद सेक्शन 17(1)(b). चलिए, तो फिर लेट अस गो टू सेक्शन 17(1)(c) एंड अब तो बहुत इजी सब। Section 17(1)(c). हाँ शिवानी, you will fall under limiting, don't worry. Section 17(1)(c). Non-testamentary documents, it's instruments which acknowledge. So they are talking about non-testamentary. They are non-testamentary, but non-testamentary instrument we know. We know what is non-testamentary, but they are talking about acknowledgements. So basically, this acknowledgement word is being not falling under section 17(1)(c). Why? Because it is kept in section 17(1)(c). Why? The word acknowledgements to admit. To admit. Now let us understand what they are saying. They say non-testamentary instruments which acknowledge the receipt or payment of any consideration on account of creation, declaration, assignment, limitation, or extension of any such right or interest. So what they are talking about? They are talking about basically acknowledgements of right. I lost my symbols. Right, interest, or title. Okay. So whosoever acknowledge any rights, acknowledge about what? Payment of price, है ना? So earnest money. Why say you have submit me earnest money, है ना? Agreement to sale, ठीक है? Mortgage charges or mortgage consideration. कि I have given you this much of amount and I have taken this much of amount. ये सारा इसके अंदर fall करता है. So what is left under section 17(1)(b) that come under section 17(1)(c)? Why it is kept? Because acknowledgement of any nature, of any value, of immoral property need a registration. क्या लगेगा? तो नॉन टेस्टामेंटरी which acknowledge, तो किसी भी तरीके के acknowledgements हैं, अगर they need always need registration. अगर वो तो 100 रुपए की वैल्यू के, 10 रुपए की वैल्यू के, 20 रुपए वाले doesn't matter. अगर वो acknowledge में immoral property का, it will be always be need registration. That is why it keeps under section 1(c). 1 से वाले इतना important है, 1(b) is very important. Next is D, 17(1)(d). अभी सारा कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी तो हम वापस आएंगे ना, अभी तो हम क्लॉज 2 में जाएंगे और फिर 1(b) में वापस आऊंगा मैं, 1(b) और 1(c). तो आई विल कम टू 1(c) अगेन और 1(b) आल्सो। जब मैं क्लॉज 2 में जाऊंगा तो 1(b) और 1(c) में फिर से आएंगे और फिर मैं 1(c) को बहुत डिटेल में जाऊंगा, ठीक है। चलिए, लीज ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी फ्रॉम ईयर टू ईयर और फॉर एनी टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर, ठीक है। तो ऑब्वियसली दिस इज लीज ऑफ 1 ईयर और अपवर्ड। तो लीज एक्सीडिंग 1 ईयर नीड रजिस्ट्रेशन, सिंपल, ठीक है। तो लीज हमेशा इमोरल प्रॉपर्टी होती है, हमको पता है। तो अगर लीज है तो ईयर बाय ईयर है, तो ईयर बाय ईयर,
तो 11 मंथ्स 11 मंथ्स 11 मंथ्स 11 मंथ्स करके है, या फिर मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर। तो होता है ना 90 साल की लीज पट्टा, वी कॉल्ड इट पट्टा, एग्रीकल्चर लैंड का होता है 90 साल का, 99 साल का। ऑल दीज नीड रजिस्ट्रेशंस, ठीक है। तो लीज वैल्यू मोर देन 11 मंथ्स बेसिकली, और continuously year by year by year by year, they are continuing per day year by year, then that need registration, right? And next is section 17(1)(e). This is very very important for us to understand. This is very important for our exam perspective, okay? Why it is important, try to understand. छोटा सा concept है, बहुत बड़ा concept नहीं है। Non-testamentary instrument transferring or assigning any degree. So this is a case of transfer or assignment of decree of court or order or any award. Decree, order or award. Says transfer of decree, order or award. So decree means we know. Decree means we know. Section 2, clause 2 of CPC. We know this. This is also part of CPC. What is order? Award, basically they are talking about arbitral awards. Or it can be tribunal awards. The tribunal award करती है ना, tribunal awards. तो arbitral awards या tribunal award. ट्रांसफर और असाइनमेंट, तो बेसिकली सेक्शन 17(1)(b) हमको बता रहा है कि यू कैन ट्रांसफर डिग्रीज और अवार्ड। तो फॉर एग्जांपल ए हैव डिग्री ऑफ लैंड एक्स अगेंस्ट बी। तो ए के पास डिग्री है एक्स लैंड की बी के अगेंस्ट। ए कैन सेल डिग्री टू सी। ए के पास पावर है, तो डिग्री इज लाइक अ प्रॉपर्टी ओनली, ही कैन सेल इट टू सी, ठीक है। एंड सी कैन गेट इट एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट बी। दिस इज वैलिड, दिस इज वैलिड। तो बेसिकली अगर कोई अवार्ड है, कोई डिग्री है, कोई ऑर्डर मेरे फेवर में आया है और मैंने उसके जो बेनिफिट्स हैं वो आपको ट्रांसफर कर दिए, तो फॉर सम मनी और फॉर सम अनदर रीजन आई हैव असाइंड यू, ठीक है, मैंने आपको अपना, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। तो बेसिकली हम ट्रांसफर का एग्जांपल लेते हैं। तो मैंने ट्रांसफर कर दिया, पैसे की जरूरत थी, मैंने बोला आई हैव दैट डिग्री विद मी विच वर्थ 10 लाख रुपीज, 20 लाख रुपीज, ठीक है, और आप मुझे इतने में दे दो, तो 20 लाख की वैल्यू है डिग्री की, मुझे 10 लाख दे दो, आप इसको एग्जीक्यूट करा लेना। This transfer is valid. This is allowed in law. But what is the manner of doing this? What is the manner of doing this is section 17(1)(e). Manner क्या है इसका? section 17(1)(e) है। क्या बोलते हैं section 17(1)(e)? Let us read and find out कि क्या है। This is a non-testamentary instrument transferring or signing any decree, order or court or any award when such decree or order or award purports, हमको पता है what mean by purports, operates to create, declare, assign, limit or extinguish, whether present or future, any right, title or interest, whether vested or contingent, of value 100 rupees and upward हुआ immovable property। तो बोलते हैं ये सेल जो है ये वैलिड है, बट अगर ये 100 रुपीज से ऊपर की प्रॉपर्टी की है ना, तो अगर ये दैट मींस डिक्री की जो वैल्यू है, बेसिकली दिस इज डिक्री वैल्यू, डिक्री इंक्लूड प्रॉपर्टी वैल्यू अबव 100 रुपीज। तो बोलते हैं जो डिक्री आप ट्रांसफर कर रहे हो सी को, अगर उसकी वैल्यू कैसी है, उसके अंदर जो प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है वो 100 रुपए से ऊपर की है, फर्स्टली। सेकेंडली जो डिक्री है वो डिक्री इज
creating, assigning, limiting और extinguishing. तो वो क्रिएट कर रही है, असाइन कर रही है, एक्सटिंग्विश कर रही है सर्टेन राइट्स इन इमूवेबल प्रॉपर्टी. तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में सर्टेन राइट को, जो हमने क्लॉज 1 में पढ़ा है, 1B में पढ़ा है, कह रहा उस तरीके की है, तो आपको क्या कराना पड़ेगा? नीड रजिस्ट्रेशन, नीड द ट्रांसफर टू गेट रजिस्टर्ड. सिंपल. तो कहते हैं you can transfer or you can assign degree to anyone, but if degrees of such nature which involve the characteristic of what, same as clause 17(1)(b), that means it involves a property more than 100 rupees, and degrees of such nature which is creating any title in you, or it is creating, assigning you something, or it is limiting certain right in you, or it is extinguishing your right, or it is creating, assigning or limiting, extinguishing anyone other's right. तो किसी और के राइट को क्रिएट कर रही है या एक्सटिंग्विश कर रही है, आपके राइट को क्रिएट या एक्सटिंग्विश या लिमिट कर रही है. प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसके अंदर इन्वॉल्व है, और 100 ऊपर से वैल्यू की प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है. तो ऐसी डिग्री का ट्रांसफर अगर आप करेंगे तो दैट नीड रजिस्ट्रेशन फॉर दिस. तो यू कैन नॉट ट्रांसफर सच डिग्रीज विदाउट आवर रजिस्ट्रेशन. दैट इज माय पॉइंट. तो दिस इज सेक्शन 17 1A B C D and E. Tomorrow we will complete the proviso. So I have left the proviso. We read with proviso 1A and then we enter into clause B. So obviously tomorrow only we will be able to complete clause 2, that is known as exceptions of section 17(1)(b). So section 17(1)(b) और C के exceptions हैं clause 2. That means though there are certain documents which fall under section 17(1)(b) or section 17(1)(c), still they are not required to be registered. तो आपने सिर्फ आज तक इतना पढ़ा होगा कि सेक्शन 18 में वो लिस्ट है, सेक्शन 17 में सब रजिस्टर्ड है. बेसिकली सेक्शन 17(1)(b) में वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जो रजिस्टर कराने की जरूरत ही नहीं है, और सेक्शन 18 में वो लिस्ट है जो ऑप्शनल रजिस्टर है, आप करा भी सकते हो, आप नहीं भी कर सकते. ठीक है, तो विल कंपेयर दैट सेक्शन 17 क्लॉज 2 एंड 18 को एक साथ कंपेयर करेंगे. ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पार्ट कवर हो जाएगा. फिर उसके बाद थोड़े थोड़े सेक्शंस हैं. फॉर एग्जांपल 47 वी हैव टू डू, है ना, वो करेंगे.